वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय वृंदाय नमो नमः। Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, Text 28. So I will recite one line and you can repeat after me. Jignasita atmayatadyo nirvyasa sutaraso vedam nrupagangayam yasyatya ad akuto bhayam jignasita atmayatadyo nirvyasa sutaraso vedam nrupagangayam yasyatya ad akuto bhayam जिज्ञासिता आत्मयथार्यो निर्व्याससुतासो वेदं नृपगङ्गाय सत्य आद अकुतो भयम् जिज्ञासितात्मयाथार्यो निर्व्याससुतादसो वेदं नृपगङ्गायां सत्यात्मतो भयम् जिज्ञासितात्म्य यथार्थो निर्व्याससुतादसौ वेदं नृपगङ्गायां यस्यात्यर्थाकुतो भयम् ज्ञासितात्मयार्थे शतुश्रुतादशो गंगाया कुतो भयम् जिज्ञासिता आत्मयथार्यो निर्व्याससुतादसो
Ritvedam Prabhagangayam Yasyatyanam Jignasitaatmayatadyo Nirvyasarastadaso Nirvedam Prabhagangayam Yasyatyanam Jignasitaatmayatadyo Nirvyasarastadaso Ritvedam Prabhagangayam Yasyatyanam Jignasitaatmayatadyo Nirvyasarastadaso Ritvedam Prabhagangayam Yasyatyanam Synonyms. Jignasita, have inquired of. Atmayatartha, Atmayatyartha, right knowledge of one's own self. Mune, from the learned philosopher. Vyasa Sutta, son of Vyasa. Asau, he, itva, quitting. Idam, this material attachment. Nripa, O king. Gangaya, on the bank of the Ganges. Yasyati, will go. Adha, directly. Abuto Bhayam, the life of fearlessness. Translation and purport by His Divine Grace, Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. Translation. After inquiring about the proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. Please repeat after me. After inquiring about proper self-knowledge from the son of Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. Purport. Material knowledge means ignorance of the knowledge of one's own self. Philosophy means to seek after the right knowledge of one's own self or the knowledge of self-realization. Without self-realization, philosophy is dry speculation or waste of time and energy. Srimad Bhagavatam gives the right knowledge of one's own self, and by hearing Srimad Bhagavatam, one can get free from material attachment and enter the kingdom of fearlessness. The material world is fearfulness. Its prisoners are always fearful, as with the prison house. In the prison house, no one can violate the jail rules and regulations, and violating the rules means another term for extension of prison life. Similarly, we in this material existence are always fearful. This fearfulness is called anxiety. Everyone in this material life, in all species and all varieties of life, is full of anxieties, either by breaking or without breaking the laws of nature. Liberation or mukti means getting relief from the constant anxieties. This is possible only when the anxiety is changed to the devotional service to the Lord. Srimad Bhagavatam gives us the chance to change the quality of anxiety from matter to spirit. This is done in association of the learned philosopher like the self-realized Sukadeva Goswami, the great son of Sri Vyasadeva. Maharaj Parikshit, after receiving warning of his death, advantage of this opportunity by association with Sukadeva Goswami and achieved the desired result.
This is a sort of imitation. There is a sort of imitation of this reciting and hearing of Srimad Bhagavatam by professional men and their foolish audience thinks that they will get free from the clutches of material attachment and attain the life of fearlessness. Such imitative hearing of Srimad Bhagavatam is a caricature only should not be misled by such a performance of Bhagavatam Saptaha undertaken by ridiculous, greedy fellows to maintain an establishment of material enjoyment. हिंदी में अनुवाद होगा श्लोक का Jai. अनुवाद ज्ञान है कि महान दार्शनिक से समझ आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर बहुत सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार के बिना का दर्शन मात्र शुद्ध चिंतन या समय तथा शक्ति का जय मात्र। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी ग्रह के तरफ। बंदी ग्रह का कोई भी व्यक्ति बंदी ग्रह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता और यदि करता है उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयानक का चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से जैसे कि श्रीमद् व्यास देव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत के इस तरह से वाचक तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्य को ऐसे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सद्गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सद्गण ललिता शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Srivasani Gauravatmashanda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. The great sages of Naimisharanya, headed by Saunaka Rishi, were performing a great yajna. The men who are not connected with the Supreme Lord do not know the right path of peace and prosperity. जो परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ में स्थापित नहीं है उनको वास्तविक सुख और शांति और ऐश्वर्य का मार्ग हो गया। However, the sages who are well connected with the Supreme Lord know how to bring the real peace and prosperity. लेकिन ऐसे ऋषिगण साधुगण को भगवान से संबंध वास्तविक रूप से पता है कैसे वास्तविक शांति और सुख प्राप्त किया जाए। Sadhus are the true friends of all living entities. और इसीलिए ऐसे साधु संत सभी जीवात्माओं के वास्तविक चिंतन। They put themselves in a lot of risk put themselves in a lot of risk and personal inconvenience in order to safeguard the humanity. अपने आप को स्वयं को कठिनाइयों में आते हैं जिससे कि सभी मानवता का कल्याण। As we all know, Lord Vishnu is like a great tree. जैसे भगवान विष्णु एक महान वृक्ष के समान। And who are the branches, twigs, and the leaves? और कौन की शाखाएं? The demigods, the men, the siddhas, the charanas, the vidyadharas, etc. जो सिद्ध है, जो चारण, ये सभी लोग हैं, ये सब की शाखाएं। So when we pour water to the root of the tree, everybody becomes automatically nourished. जब हम उस वृक्ष के मूल जड़ में जब हम खींचते हैं, उसको जड़ लाते हैं, सभी शाखाएं पत्तियां स्वस्थ हो जाती हैं। So the great sages of Naimisharanya, they understood that there cannot be a greater yajna other than Nama Sankirtanam. करने के लिए वो समझ गए कि भगवान जो कथा ही कीर्तन करना उससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं। So it is called as Sankirta Mahayajna. इसको संकीर्तन महायज्ञ कहा जाता है। In the Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 17.22, it is said, Kali Kala Nama Rupe Krishna Avatara Nama Haite Haye Sarva Jagata Nistara. So, in the age of Kali, the holy name of the Lord actually is the incarnation of Lord Krishna. किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है इस कलम में होती है। So by simply chanting the holy name, one gets the divine association of the Supreme Lord. और केवल भगवान के नाम के संबंध में आने से ही भगवान का वास्तविक सत्ता। And in the Brihad Narada Purana, it is said, Hare Nama Eva Kevalam, Kalau Nasti Eva Gatiranyata. It says in the age of Kali, which is the age of fraudulent hypocrisy, the only means to deliver is chanting the holy name. और बृहद नारद पुराण में बताया गया है कि इस कली युग में इस संसार के जंजाल से निकलने का जो मार्ग है वो केवल भगवान के नाम का। So there is no other way, there is no other way, there is no other way. So Suta Goswami started describing the glories of Maharaj Parikshit. Because to glorify the Supreme Lord and to glorify the devotees of the Supreme Lord are one and the same.
So Suta Goswami beautifully talks about how great Parikshit Maharaj was as a devotee of the Supreme Lord. और सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज कैसे उनके महान थे। It was not a sudden event, but he was a devotee right from his birth. और ये कोई अचानक से घटना नहीं घटी कि अपने जन्म काल से ही माता के खुद से ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया, महान था। So he saw the Supreme Lord when he was in his mother's womb. Similar to Prahlad Maharaj never used to play with the mundane toys. He only was interested in playing with the Krishna Vigraha. जैसे प्रहलाद महाराज की बाल काल में भी कोई कहे और नहीं कर रहे वो भगवान की कृपा से So similarly, Parikshit Maharaj was also not interested in mundane play. परीक्षित महाराज की ये जो भौतिक खेल है उसका So Lord Krishna says in Bhagavad Gita 11.54, Bhaktyastva ananyaya shakya ahameva vidorjuna yatum drishtum chatatvena praveshtum cha parantapa. Where he says, the only through undivided devotional service can he be understood. 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं और उनके इस रहस्यमय ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। So Parikshit Maharaj was a very rare child. Parikshit Maharaj एक बड़े दुर्लभ बालक, and he was not only rare, he had the greatest opportunity of growing up with some great personalities like Yudhishthir Maharaja, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva. उनका जन्म ही दुर्लभ नहीं है बल्कि उन्होंने जिन लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत किया उनके जो पितामह है वो सब पंच पांडव भी भगवान के महान था। So when we are in the association of great personalities, that greatness that will also get reflected in our mind and heart. जब हम ऐसे महान संग के अनुगत में तो उनकी कृपा से वो महानता हमारे भी व्यवहार में करती है। So Parikshit Maharaj grew up and he was coronated as a king when the Pancha Pandavas retired to Himalayas. तो परीक्षित महाराज को राजा बनाया गया जब पंच पांडव ने वहां के लीला समाप्त करने के पश्चात जब वो हिमालय की ओर प्रस्थान करते। So Parikshit Maharaj ruled the earth so beautifully with all the religious principles. परीक्षित महाराज ने बड़े सुंदर रूप से राज्य शासन किया। And Parikshit Maharaj personally went to attend things rather than deputing his secretaries and ambassadors. परीक्षित महाराज स्वयं जो है इस प्रकार की जो धापलसी योजनाएं होती थी स्वयं जाते थे बजाय अपने जो उनके मंत्री वगैरह उनको भेजने। So he was really taking personal care of all the associates. तो अपने सभी प्रजा और सभी उनके जो संगी थे उनका स्वयं उद्धार। So Lord says in Bhagavad Gita 3.21, yat yat acharati sheshtas tat tat eva karo jana sayat pramanam kurte lokastat anuvartate. So whenever or whatever great men, whatever action the great men perform, the common men will obviously follow that. जैसे भगवद गीता में बताया गया कि जो महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं महान पुरुष और जो बाकी लोग हैं वो उनका ही अनुसरण। And whatever standards they set, obviously that is good. That is going to be the policy for pursuits. और वो जो महान करते हैं वही सभी लोगों के लिए वही मान। So everything was going very fine. सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। But Krishna had a different plan. Because Krishna wanted to accomplish many things. So when Parikshit Maharaj went into the forest, he suddenly became very, very thirsty. So he was looking for a place where he could drink water. And he came across the ashram of Samyak Rishi. And Samyak Rishi was in deep meditation. He was not really in his external consciousness.
His mind was deeply involved in self-realization of the soul. मन उनका बड़ी गंभीरता से आत्म साक्षात्कार में युक्त था। But Parikshit Maharaj was obviously thirsty. और परीक्षित महाराज उससे बहुत प्यासे थे। So he requested some water. उन्होंने कुछ जल के लिए विनती किया। So it is said that when any guest comes to your house, it is a Vedic custom to give water and some food and some nice sweet words. वैदिक सभ्यता के अनुसार घर में प्रवेश करते हैं तो उनको तुरंत ही हमें जल या कुछ मिष्ठान या कुछ और खाने को मिलना चाहिए। Atithi Devo Bhava. अतिथि देव के समान हो। So the Shastras say actually that even if your enemy comes to your house, you have to treat them so well. खास करके जब आपके शत्रु भी घर पर आए तो उनको मित्र कैसा लगा। Prasad and Upachar. प्रसाद और उपचार Both are very important. दोनों बड़े महत्वपूर्ण। So when you serve your enemy so well, he will forget that he is your enemy. शत्रु भी घर पर आए तो भूल जाएंगे वो आपके। He'll be wondering, have I come to my friend's place? क्या मैं अपने मित्र के घर पर आ गया हूँ ऐसा उनको आश्चर्य। That is the power of Upachar and Prasad. ये प्रचार और प्रसाद का ये महिमा है। So obviously Samyaka Rishi did not realize that Parikshit Maharaj was right in front of him, and hence no water was served. क्योंकि सभी ऋषि गहरे ध्यान में वो कुछ बाहर से इतना उपकार नहीं कर रहे थे, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो उन्होंने उनके विनती करने पर भी उत्तर की जल नहीं दिया। So when Krishna wants to do something, there are so many activities that come with it. भगवान श्री कृष्ण योजना के अनुसार जब कोई लीला करते हैं तो उसमें कई ऐसे कार्यकलाप होते हैं। So Krishna wanted to open up Kali Yuga. He wanted to descend as Yugavatar Sri Chaitanya Mahaprabhu. He wanted Srimad Bhagavatam to be born. So these were the divine arrangements of Lord Krishna. So we are all instruments. We are all puppets. And if we understand this, our life will definitely be successful. So, remembrance. We all know about remembrance. We also know about forgetfulness. So, it's all because of Krishna we remember, and it's because of Krishna we forget. तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी कृपा के द्वारा ही हम चीजें स्मरण कर पाते हैं और चीजें। So it was Krishna's desire that Parikshit Maharaj should, for a few seconds, forget his ethics. तो भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ये एक ब्राह्मण के समय कैसे हमें। So what did Parikshit Maharaj do? क्या किया उन्होंने? He found a dead snake. So with his arrow, he took the dead snake and he made a Samp Mala on Samyak Rishi. And he left. And as he was going towards his palace, he thought, what did I do? But it is too late. Nothing can be reversed. Even our words, we have to be careful in what we say. Because we cannot withdraw our words. The only thing is, if we say something bad, we can only ask for apology. So now Shringi got to know that somebody has garlanded, Parikshit Maharaj has garlanded a dead snake on his father. So obviously he said, I am going to teach a good lesson for Parikshit Maharaj.
वो सोचे कि अब तो मैं इनको जरूर एक पाठ पढ़ूंगा, इसको निकाल किया सांप डाला है, मैं उसको दंड दूंगा। So what he did, he sipped some water और तुरंत उन्होंने बिना कुछ जाने समझे जब स्नान करे तो वहीं उन्होंने जल लिया। and he said that within the next 7 days, Emperor Parikshit will be killed by being bitten by a snake bird. जिसने भी मेरे पिता के साथ में कार्य किया है, 7 दिन के अंदर तक्षक सांप उसको डस लेगा। और So obviously Parikshit Maharaj got to know about this curse. और तब जैसे परीक्षित महाराज पहुंचने वाले थे वहां पर, वो ये श्राप जो श्राप मिला, तो श्राप की सूचना उनको मिली कि आपको श्राप। What would be the case if we get some sharp like this and we get to know that in 7 days we are going to die? What will be our reaction? आप सोचिए, कल्पना करिए, कल्पना करना भी दुखद है, ये करिए कि अगर 7 दिन के अंदर ऐसा कोई श्राप हमको मिले कि 7 दिन के अंदर आपको प्राण छोड़ने, प्राण त्यागने हैं, सांप काटने वाला है, तो हमारी क्या स्थिति होगी मनुष्य? First we will inform our wife. सबसे पहले हम अपने वाइफ अपनी पत्नी को बताएंगे। Then we will make sure that our insurance policies are all okay. और जब हम ये सोचेंगे कि हमारे जितने भी जीवन बीमा किया है उसकी ठीक-ठाक है नहीं, Then we will raise the power of attorney. और तब उसके बाद जितने भी हमारी संपत्ति है उसका हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके उस संपत्ति का स्थानांतरण करने वाले होंगे। We will call all our relatives सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाएंगे and we will start crying और रोना शुरू कर देंगे, morning to evening. सुबह से लेकर शाम तक रोते रहेंगे। Please take care of my wife. मेरे पत्नी का ध्यान रखिएगा, Please take care of my children. उसका ध्यान रखिएगा, Please take care of my puppy. मेरे कुत्ते हैं उसका ध्यान रखिएगा, Please take care of my cat. मेरे बिल्ली वगैरह उसका ध्यान रखिएगा। So we will make a big laundry list of things that we have to do. And when we die, we will only think about this puppy and the cat. प्रकार से चिंतन करते हुए बड़ी वेदना के अनुसार, बड़ी चिंता में अपने कुत्ते बिल्ली को पाल रहे हैं, चिंता के करते हुए करते हुए प्राण त्याग दिए। But Parikshit Maharaj was not like this. परीक्षित महाराज ऐसे He was not attached to his family. उनको कोई He was not attached to his palace. He was not attached to his power. He was not attached to his beauty. He was not attached to his life. But he was only attached to one person. वो केवल एक ही व्यक्ति से आसक्त थे, The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। So this is an example as to how to quit the body. तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है परीक्षित महाराज ने कि मृत्यु की कला कैसे मरा जाए। Ante Narayana Smriti. भागवत में बताया गया कि मनुष्य जीवन तभी सफल होता है जब हम नारायण की स्मृति आए। So we have to leave the world by thinking, hearing, and chanting of the Supreme Lord. कि हमको भगवान की कार्य कराने का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए प्राण त्यागते। So in Bhagavad Gita, it is said, Yam yam vapi smaran bhavam tyajattante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sada tat bhava bhavita. In whatever state of being one remembers, when he quits the body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 8वें अध्याय होते हैं कि जिस चेतना के जो भी चेतना आपकी है मृत्यु के समय, जिस चेतना में आपने प्राण छोड़े, उसी प्रकार की स्थिति आपको अपने जीवन में प्राप्त। So whatever we have covered is only the introduction to what we are going to discuss. अभी तक हमने केवल भूमिका के बारे में चर्चा किया कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है समय, और परीक्षित महाराज क्या घटना घटेगी अभी भविष्य। So here, Canto 1, Chapter 12, the title is Birth of Emperor Parikshit. तो यहाँ पर जो शीर्षक है इस अध्याय का, प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का, उसका शीर्षक क्या है? सम्राट का जन्म। Samrat means he is the king of kings. सम्राट का मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट है, राजाओं के राजा। So he is not an ordinary personality. वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। So only when we understand the greatness of such personality, you will be interested to understand their pastimes and their greatness. जब हम उनकी महानता के बारे में जान पाएंगे हो रही है, उसको हम समझने का प्रयास।
So in this particular verse, Jignasita Atma Yatartyo Munervyasa Sutadasau Itvedam Nripagangayam Yasyatya Adat Akutovriam. It's beautiful sloka. Srila Prabhupada's translation and purport is really amazing. तो आज के श्लोक का So here the translation goes like this. After inquiring about Vyasadeva, who will be a great philosopher, he will renounce all material attachment and achieve a life of fearlessness. बहुत सुंदर तात्पर्य देखिए ये ब्राह्मण कैसा कि राष्ट्र के महान दार्शनिक से सबसे आत्मज्ञान के विषय किसी दूसरा पहले हो गई क्योंकि गुरु कौन से वाला किसे छोड़ देंगे के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेंगे महाराज और निर्भय जीवन प्राप्त करेंगे. How did Arjuna get enlightenment? अर्जुन को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? This question is to all of you. How did Arjuna get enlightenment? आप सभी के प्रश्न में जान रहे हैं अर्जुन को कैसे ज्ञान प्राप्त? भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, ग्रहण किया. Very good. So Arjuna got enlightenment through Lord Krishna. अर्जुन को ज्ञान हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त. So how did Parikshit Maharaj get enlightenment? परीक्षित महाराज को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम के द्वारा. So we are talking about the birth of Bhagavad Gita and the birth of Bhagavatam. There is the Supreme Personality of Godhead and his devotee, and there is devotee in both the sides from the receiving side. तो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम हम देखते हैं दोनों का प्राकट्य है. अर्जुन को ज्ञान देने भगवान ने गीता का प्राकट्य किया और परीक्षित महाराज को ज्ञान देने के सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का प्राकट्य. So when important topics and important instructions are discussed, it's always between great personalities. ऐसे जब विषय पर चर्चा होती है, जब ऐसे ज्ञान भगवान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो महान भक्तों के माध्यम से. So when great personalities discuss something, obviously the information that comes out is also going to be great. ऐसे महान व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होती है, ये वार्तालाप है, इसका अर्थ है कि बहुत महान विषय वस्तु प्रकट होने वाला है. And when we are connected with this great knowledge, what happens to us? जब ऐसे महान ज्ञान से हमारा संबंध होता है तो हमें क्या होता है? This question is to all of you who are assembled here. तो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी भक्तगण से प्रश्न है, जब ऐसे संबंध ऐसे विषय से हमारा संबंध बनता है, उनका श्रवण करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? क्या होता है? भगवान से संबंध जोड़ने का अवसर प्राप्त. Very good. जैसे कि then we desire to surrender to Lord. Jai. Jai. और कोई उत्तर? I want at least 10 answers. 10 उत्तर चाहिए, 10 उत्तर, 2 उत्तर आए. Otherwise we are not proceeding. भगवान से प्रेम बढ़. Hari bol. 3. You got 3 answers now. और बताएं. 7 more to go. 7 और बताएं. 7 days and 7 answers. Very good. We come out of the material life and Very nice. That is what is the purport of Prabhupada in today's sloka. Fearlessness. Hari bol. 5 answers. और 5 more to go. संसार की आसक्ति से दूर जाते हैं. Okay, great. 6. Yes. बहुत अच्छे. Path. Very good. Spiritual path. 6. 7. 8वां बताइए. Anxieties will be countered. Jai. Very good. 8. 2 more to go. 9वां नाम बताइए. 2 more to go. Yes. जो तमोगुण से परे हो जाएंगे. Jai. Prabhuji.
Jai. Very nice. Very good. So all your answers are very beautiful. Very good. So all your answers are very nice. End of day, the most important thing is we are connected. तो सब आपके उत्तर बड़े सही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी कब होगा, जब भगवान से हम बहुत युक्ति पूर्वक संबंध स्थापित करेंगे, और यही इस भगवान की कथा के माध्यम से योगा के हमारे संबंध। Bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga. Yoga is the connection through which we go back to the Supreme Lord. इसलिए इसको योग कहा जाता है। भक्ति योग कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। योग का मतलब जुड़ना, जुड़ जाना। So Prabhupada starts his purport by saying material knowledge means ignorance of the knowledge of oneself. प्रभुपाद ने बहुत सुंदर शुरुआत की है इस तात्पर्य की कि भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता, अज्ञान। So in this material world, obviously it is the material knowledge that is always being discussed about. तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक विषय वस्तु के ऊपर ही चर्चा होती है। In this material world, when spiritual knowledge is discussed, it becomes a rarity. और इस भौतिक जगत में जब कोई आध्यात्मिक की बात करते हैं तो वो बड़ा दुर्लभ। So Srila Prabhupada made it very easy for all of us. लेकिन श्री गोपाल की कृपा से दुर्लभ ज्ञान हम लोग के लिए बड़े सहजता के साथ उपलब्ध, Through his books, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, through his purports, उनके तात्पर्य के माध्यम से, through his lectures. वाणी के माध्यम से। So here, the material knowledge that we are talking about is the information about the physical and tangible world. तो यहाँ पर हम जिस आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से है कि जो हमें ऐसे आचार्यों के पास से प्राप्त हो। And this material knowledge is temporary; it is not eternal. तो भौतिक ज्ञान जो है वो क्षणिक है, अस्थायी है। And it so happens that due to the material knowledge, we get entangled more and more. और इस भौतिक ज्ञान में हम लोग बहुत ज्यादा उलझते जाते हैं। And the entanglement is basically will result in birth, death, old age, and disease. वहाँ पर कोई चेयर है, और इसके साथ में हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब में फंसते रहते हैं। And what is ignorance? अज्ञानता क्या है? It is actually forgetting our true identity. अज्ञानता की वजह से हम अपना वास्तविक स्वरूप खो देते हैं। That we forget that we are part and parcels of the Supreme Lord and He is our eternal salvator. हम अपनी जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप, स्वाभाविक पहचान है कि मैं भगवान का दास हूँ, हम इसको ही भूल जाते हैं। Then Prabhupada goes on to say, philosophy means to seek after the right knowledge of one's own self or knowledge of the self-realization. आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त। Today, many universities provide a degree in philosophy. आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो दर्शन शास्त्र में भी हमें वो प्रामाणिकता लेते हैं। So it is not about, philosophy is not about acquiring master's degree or a PhD. तो सिद्धांत का इस प्रकार की बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर रही हैं। So what is philosophy? सिद्धांत दर्शन क्या है? It is to seek the true knowledge ये हमें परम सत्य की ओर लेके जाना चाहिए and re-establish the forgotten relationship with the Supreme Lord. जो हमको हमारे भगवान से भूले हुए संबंध को पुनर्स्थापित करने में सहयोग है। So understanding that this spiritual identity is the core of self-realization and philosophy. तो अपना स्वयं की आत्म पहचान करना भगवान के दास के रूप में ये भी किसी भी सिद्धांत या दर्शन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। Then Prabhupada says, without self-realization, philosophy is dry speculation or waste of time and energy. आज कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार से वही दर्शन जो सिद्धांत है वो शुद्ध चिंतन या समझना शक्ति का अपूर्व मार्ग है। So if we do not have self-realization and if we are not making an attempt towards self-realization, it is shrama evaihi kevalam. अगर हम आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने दर्शन शास्त्र या सिद्धांत पे अपना समय दे रहे हैं, इसका मतलब केवल श्रम ही केवल श्रम कर रहे हैं, कुछ लाभ। And like the Grihamedis, we all become very selfish. और जैसे कि गृहस्थ के विपरीत क्षेत्र में भी बताया गया है, and selfishness is all about our body and our family. और उसमें केवल मैं और मेरा परिवार उसी के बारे में। Krishna consciousness talks about how we get out of the bodily platform.
कृष्ण भागवत में सिखाता है कि कैसे हम दैहिक चेतना से ऊपर उठे। But material knowledge makes us believe more and more about the importance of our existence, and we are going to be in the bodily platform always. लेकिन भौतिक जो ज्ञान होता है वो हमको सदैव इस दैहिक चेतना में कैसे अपने शरीर और शरीर से संबंधित लोगों उसी के बारे में चिंतन करते रहे और पूरा अपना शक्ति उसी में अप्लाई करते। Now Prabhupada talks about Srimad Bhagavatam. प्रभुपाद आगे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्म ज्ञान है। So Srimad Bhagavatam is the right knowledge. ये वास्तविक ज्ञान Of what? किसका? Of our own self. हमारे स्वयं के लिए, स्वयं आत्म के लिए। And by constantly hearing Srimad Bhagavatam, we get out of this material attachment. और सतत रूप से इसका श्रवण करने से हम इस भौतिक जंजाल से ऊपर उठ जाते हैं। And when I read this last 3 or 4 words, Prabhupada says, enter into the kingdom of fearlessness. और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि वो श्रीमद् भागवत से मनुष्य वो मुक्त होकर निर्भरता के साम्राज्य अभय पद पर प्रवेश करते हैं। क्या सुंदर वाक्य है। Yes, it's so beautiful, Prabhuji. When I was reading it, I was wondering. I thought Prabhupada will say kingdom of God, but he says kingdom of fearlessness. तो सोचिए सब लोग चाहते हैं कि वो निर्भय बने, अभय, कोई भय नहीं हो। वो कह रहे हैं कि भागवतम का श्रवण करने से आप निर्भय के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। हरि बोल। So Prabhupada in many lectures says that life is a preparation and death is an examination. प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जीवन जो है ये एक तैयारी है और मृत्यु हमारी परीक्षा है। Do we all want to be only studying in class 5 or class 6 and or class 7 without passing? क्या हम केवल 5-6 कक्षा तक ही पढ़ना चाहते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ना चाहते? Are we all only happy to take examination and fail so happily in the examination? और खाली परीक्षा लेते रहे और परीक्षा में फेल होते रहे। See, I am a chartered accountant and CA means come again. समझ कर कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हूँ। सीए का मतलब होता है कम अगली। Come again means exam will keep on coming and we'll keep on failing. ये मतलब परीक्षा में आते रहिए बार-बार दोबारा और फेल होते रहिए। And finally when we pass, we think that we have really achieved something in life. और जब हम बाद में पास करते हैं लगता है कि जीवन में हमने कुछ हासिल कर लिया। Only after reading Bhagavatam or after the process of reading Bhagavatam, we have realized that we have not even come one step towards Krishna consciousness. फिर जब श्रीमद् भागवत पाठ के साथ समझ है कि अभी तो हम वास्तविक जीवन हमने आरंभ ही नहीं किया। So death is viewed as an examination because it is going to test our knowledge, credentials and application. क्योंकि जो अंतिम समय है मृत्यु में वही परीक्षा का समय है और उसी समय हमारी वास्तविक स्थिति, हमारा वास्तविक ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है, क्या स्मरण कर रहे हैं, उसका उसमें परीक्षण होगा। And this is possible only if we have a human body. और ये केवल मनुष्य शरीर में ही इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि मनुष्य योग में हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं। So Bhagavatam, practically the whole Bhagavatam deals about 2 inquiries of Parikshit Maharaj. तो पूरा भागवतम जो है वो प्रश्न उत्तर के रूप में How to live and how to lead. और परीक्षित महाराज ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि कैसे जीवन जिया जाए और कैसे एक मृत व्यक्ति जो मृत शैया पर पड़ा हुआ है वो कैसे शरीर को छोड़े, अर्थात कैसे जीवन जिया जाए और कैसे मृत्यु को प्राप्त करें, कैसे मृत्यु की कला वो भी सिखाई। So it's actually it's so beautiful that we get answers for all other queries that we go through in our life. और जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवतम। And Srimad Bhagavatam is also called as Amala Puran. इसलिए इसको अमल पुराण कहा जाता है। Mala means dirt. मल का मतलब कुछ उसमें मल। Amala means spotless or pure. मल का मतलब उसमें कोई मल नहीं। So this Bhagavatam is a spotless Purana. श्रीमद् भागवत को अमल पुराण कहा जाता है। अमल अनुष्ठान। In fact, I was thinking about it. My Guru Maharaj gave me the name because I'm so impure that I have to become pure at least with the name. So Prabhupada always has been emphasizing that we keep reading and hearing about Srimad Bhagavatam. इसलिए हमको श्रीमद् भागवतम आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं हम इसको गंभीरता से श्रवण और करेंगे। So this scripture will lead us to fearlessness. Fearlessness. तो जैसा कि हमने समझ लिया
कि ये शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत वो हमको निर्भय के सामने We all read many books. We all go to many astrologers. We go to so many places and say, I have lot of anxiety. So what is the solution for this? कई बार उसका फल कैसे आप The simple answer Prabhupada has given is read Bhagavatam and live Bhagavatam. श्री भगवान महान आचार्य को कह रहे हैं कि भागवतम का अध्ययन करें और भागवतम के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करें. So Prabhupada again goes to say, this material world is fearless, fearfulness. Its prisoners are always fearful within the prison house. In this prison house, no one can violate the jail rules or regulation. And violating the rules means another term of extension. And similarly, we are in the material existence are always fearful, and this fearfulness is called anxiety. Today, a lot of medical companies are making a lot of profits by selling anti-depression drugs. बाजार में इस चिंता से इस निराशा से मुक्त होने के लिए बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं. People are not able to sleep. लोगों को नींद नहीं आ रही चिंता की वजह से. People are not able to be calm. शांत नहीं हो पा रहे हैं. People are always in anger. सदैव क्रोधित रहते हैं. People are not able to be focused. उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा. So these are all symptoms of anxiety. ये सभी चिंताओं के कारण. And when the mind is not peaceful, when the mind is not happy, the mind is not blissful, obviously this anxiety is going to take a toll on the mind. इस प्रकार से चिंता के परिणाम हैं और इस प्रकार से चिंता पूरी होगी तो मन की बड़ा आक्रोश करती है. So here Prabhupada talks about the material world as a prison. यहाँ प्रभुपाद जी भौतिक जगत को कारागृह बोलते हैं. And by breaking the prison rules, definitely we are going to get extension. और जितना हम यहाँ के नियमों का पालन करें उतना ही हमारा जीवन जेल के अंदर हमारा जीवन की अवधि और बढ़ता है. There may be prisoners who would have got a 5-year sentence. जैसे किसी बंदी को 5 साल की सजा दी गई. But because of their good behavior, the 5 years will be reduced to 3 years or 2 years. अच्छा व्यवहार करते हैं 5 साल का समय 2 साल में बदल जाता है. Similarly, our stay in this material world and our existence in the material world will be completely eradicated, or it will be completely thrown away through the process of Bhakti Yoga. उसी प्रकार को ये जैसे बताया है तो भगवान उनके सभी कर्मों के निधानी को भूल देते हैं और जल्दी ही भौतिक जगत से वो आध्यात्मिक जगत की ओर. So the uncertainties and risks associated with this material world will be eradicated. इस भौतिक जगत से सभी चिंताएं दूर हो जाती. So then Prabhupada says everyone in this material life, in all species and varieties of life, is full of anxieties, either by breaking or without breaking the laws of nature. प्रभुपाद जी कहते हैं कि Kunta means anxiety. कुंठा का अर्थ है चिंता. Vaikunta means where there is no anxiety. सिर्फ भगवान के सामने बैठा है. And in the Vedas it is said that there are 8.4 million species of life. So water-based species are 0.9 million. Plants and trees 2 million. Reptiles 1.1 million. Birds 1 million. Animals 3 million. And finally humans, it is 0.4 million. I'm going to ask a question now. How many of you are good in mathematics? Raise your hand. Anybody who's good in mathematics, raise your hand. Don't feel shy. You're good in maths, Prabhuji? Okay, who has got? Mataji, 100 marks. 100 of 100. Oh, 100 out of 100. Okay, I'm going to ask.
So this question is to Pratiksha. What is 400,000 divided by 8.4 million as a percentage? तो 4 लाख को 50 से आ गया, कितना परसेंटेज होगा? Okay, don't worry. I'm not going to stress your brain. It is 4.76%. तो 5% भी नहीं है, 5 से कम %. So we are very lucky, right? Yes. We are very lucky, no, to be in that 4.76%. इसका मतलब कि वो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम हमारा यहाँ पर प्रतिशत है. If just imagine that if I am a monkey, although I have a monkey mind, I am a monkey sitting here. Will you anybody sit here and watch this monkey except in a zoo? अगर मैं यहाँ पर बंदर के रूप में बैठा हूँ, क्या आप यहाँ पे देखना चाहेंगे? And will you spend so much of 1 hour of your precious Friday morning? Will you do that? क्या आप शुक्रवार को प्रातः काल को उठ करके यहाँ पर आएंगे और बंदर से बात सुनेंगे आप? No, right? And if on the other hand, if I am here as a human, and if there are a lot of animals in front of me, will I be motivated to speak? Although great personalities have done that. और क्या अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मनुष्य के रूप में और आप सब बंदर हूँ, तो क्या मैं बंदरों को सुनाऊंगी? So the beauty is, if we are having this Manusha Janma, we have to make best use of it. तो ये सबसे उत्तम बात है कि देखिए हम सबको सौभाग्य से मनुष्य योनि मिली है और मनुष्य योनि में ही हम इसका उपयोग करके क्रम जिज्ञासा करें. So there are two. So let us talk about in the next 1 or 2 minutes. We talk about the animal anxiety and the human anxiety. क्या चिंता होनी चाहिए मनुष्य की और क्या चिंता होती है पशुओं की? So animal anxiety, first anxiety is survival anxiety. पशुओं की चिंता होती है कैसे मैं जीवित रहूं, कहाँ भोजन मिलेगा? In the Amazon jungle, the deer doesn't know when it is going to be eaten up by the lion. देखते हैं कि जंगल में पता भी नहीं होता है हिरणों को कब उनको शेर खाने वाला है. Next is the territorial anxiety. Territorial anxiety. उसके बाद जो स्थान की जो चिंता होती है. So the minute a lion or a tiger enters into another territory, they start fighting. जैसे ही एक शेर या एक कुत्ता दूसरी गली में आता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. Next is environmental anxiety. उसके पश्चात वातावरण की जो चिंता है. The birds and species are not able to live because of the corrupted environment. जैसे हम सब इतना प्रदूषण कर रहे हैं, इस प्रदूषण में पशु पक्षियों के लिए बड़ा तकलीफ हो रहा है. Then separation anxiety, it's especially for the domesticated animals. और जो पालतू जीव जंतु है उनकी भी चिंता है. Then there's confinement anxiety. जो लोग बिल्कुल एकांत पे या कोने में रहने वाले लोग उनकी चिंता है. So animals have their list of anxieties. तो ये है चिंता किसकी? पशुओं की चिंता. Human anxiety. और मनुष्य चिंता क्या है? Health anxiety. हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो? You do not know when we will fall sick. जब कोरोना किससे आया है? As it is, the corona news is already in the papers. जैसे कोरोना के समाचार आ रहे हैं, दूसरा कोरोना आने वाला है, चल रहा है. Will the corona come back again? क्या कोरोना फिर वापस आए? Should we take the vaccination? फिर से वैक्सीन Will we lose our job? क्या हमारी नौकरी जाएगी? So this is health anxiety. ये हमारी चिंता है. Then financial anxiety. आर्थिक चिंता. How am I going to repay my loan? कैसे मेरे लोन को मैं पे करूं? How am I going to pay the school fees? जो कि How am I going to take care of myself? कैसे अपना Then performance anxiety. के बाद अपने काम करने की गुणवत्ता की चिंता. If I don't do my job properly, my boss is going to scold me. काम नहीं तो मुझे काम से निकाल देंगे. We get more than the mother, we get a battings from our boss. Yes. अपने घर से ज्यादा हमको हमारे जो बॉस हैं उससे शिकार है. Then we have so many anxieties such as relationship anxiety. संबंध के बारे में चिंता, कैसे संबंध हमारे अच्छे रहे. There is no compatibility between husband and wife. पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं. No compatibility between the son and the father. बच्चों और माता-पिता के बीच में संबंध अच्छा नहीं. Earlier, we used to when we talk about joint family, it used to be father, mother, husband, wife, children, your uncle, uncle's wife, uncle's children, like that. प्राचीन समय में किसी प्रकार की बात को युक्त परिवार में सब लोग साथ रहते थे. माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे सब एक साथ रहते. Today, if they ask you, are you in joint family? We'd say yes, because I am living with my wife and children. So that has become the unfortunate state of affairs. Then comes the technology anxiety.
pager to mobile, कि मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा, typewriter to desktop, टाइपराइटर से लेकर के डेस्कटॉप उसकी चिंता है, desktop to laptop, डेस्कटॉप से लैपटॉप पे आ गए, Google search to ChatGPT, गूगल से हम लोग चैट जीपीटी पे आ गए, banking to mobile banking, और वो अभी हम जाने से पहले बैंक में आप सब मोबाइल पे बैंकिंग हो रही है, commerce to e-commerce, commerce to e-commerce, ई कॉमर्स सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। physical map to Google map. और पहले हमारे पास जो मैप हुआ करता था वो गूगल पे आ गया है, So these are all actually causing anxiety. और चिंताएं हमारी बढ़ती जा रही है। So what is the solution for this? How to get out of this anxiety? इससे का उपाय क्या? What is the solution for all these anxieties? ये सब चिंताओं से बचने का उपाय क्या है? भगवत संग, भगवत भक्तों का संग, वेरी गुड, Very nice. Association. पीछे के दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। पीछे की दुनिया में वापस जाना पड़ेगा, तकनीकी से पहले वाली दुनिया में वापस जाना। So how do we come out of this anxiety? Being in this material world. कैसे भौतिक जगत में रहते हुए चिंताओं से कैसे बच सकते हैं? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. The beauty of this Hare Krishna Maha Mantra is the Hare Krishna Maha Mantra will take you to Bhagavatam. The Hare Krishna Maha Mantra will take you to devotees. The Hare Krishna Maha Mantra will take you to Bhagavad Gita. Hare Krishna Maha Mantra will take you to Prasadam. Hare Krishna Maha Mantra will take you to all the good things that you need to have. तो भगवान के नाम का जब कीर्तन दर्शन करने से हमको भगवान के भक्तों का संग, भगवान का प्रसाद, शास्त्र, ये सब का आश्रय लेकर के जो भगवान ने स्वयं बताया, उसने हमको बनाया है, वही बता रहे हैं कि इन चिंताओं से आप तभी बच सकते हैं, तभी आप शांत और सुखी हो सकते हैं जब हम भगवान का आश्रय के नाम के बाद। So Prabhupada says Srimad Bhagavatam gives us the chance to change the quality of anxiety from matter to spirit. जिससे कि हमारी सभी प्रकार की चिंताएं जो जड़ से अभी हमारी चिंताएं हैं वो चेतन से हो जाए। So the anxiety will not go, but the quality of anxiety will differ. So what kind of anxieties we will have? अब चिंता क्या होगी? First anxiety पहली चिंता होगी to get up at 4 o'clock in the morning. कि हम गुरु के बताए हुए निर्देश का पालन करें, सुबह प्रातः काल को। Second anxiety दूसरी चिंता होगी to finish at least 16 rounds in a day. मैंने अपने वचन दिया है भगवान के समक्ष, सब वैष्णव के समक्ष मैं अपनी साधना अच्छे से करूं, अपनी जप करता हूँ, चिंता नहीं। Other anxiety to read the scriptures. हमने ये मैंने वचन दिया है कि मैं भगवान की संस्था में सेवा करता हूँ, सेवा करने के लिए क्या भाव होना चाहिए, या नहीं करना होगा, जानना होगा। The other anxiety is to be always in the good association of devotees. सदैव चिंता होगी कि अपने को बचाने के लिए हम सदैव साथ बोलें, जो उसको पसंद है, कैसे मैं उसको पसंद नहीं करूं। The other anxiety is to do service to the Supreme Lord. चिंता रहेगी कैसे हम सेवा की और जब हम लोग साथ सेवा नहीं मांगते कैसे सेवा करें। So which anxiety is better? The one which we talk about health, finance, work, those anxieties are better, or these anxieties are better? तो अब ये निर्णय हमको लेना है कि हमको जगत की चिंता से युक्त होना है या हमको आध्यात्मिक जगत की दिव्य चिंताओं में युक्त रहना है। चिंता तो रहेगी, जब तक संसार में रहेंगे चिंता रहेगा, लेकिन ये चिंता, आध्यात्मिक चिंता, ये सर्वोपरि। Please repeat this after me. Nashyaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya yoti uttama shloke kirtavati naishti. So by regular attendance in the Srimad Bhagavatam classes and rendering service to pure devotees, all the anxieties of the heart will be completely destroyed. बहुत से श्लोक बताया गया श्रीमद् भागवतम व्यक्ति और भागवतम शास्त्र दोनों का संग लेने से हमारे सारे निमित्तों से हमारे सारे दूर जाएंगे और श्रद्धा है
वो निष्ठा के हैं। Before coming to Krishna consciousness, I used to get up at 8:30 in the morning on a Friday. कभी कह रहे हैं कि सभागा में आने के पहले मैं शुक्रवार को छुट्टी के दिन होने के नाते 8:30 बजे उठा करता। So nowadays, अब whether it is Friday, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, the body clock tells us, जी हो जाओ, get up at 4 o'clock. अब चाहे शुक्रवार हो चाहे रविवार हो चाहे किसी भी दिन हो, वो हमको घड़ी बोलती है कि जाओ और कार्य करो। So when the alarm rings, we are not upset. और अब जब अलार्म करता है तो हम चिंता नहीं। Before when alarm rings, we used to say, "Oh, who invented this alarm?" पहले जब ऐसी बात होती है किसने अलार्म बना दिया, बंद को सुस्ते हुआ भी। But today, the situation has changed because of sadhu sangha. अब इसकी बदल गई है इसके द्वारा। Because these sadhus, who are all of us, who are sitting amongst us, they keep advising us that we have to live a life of discipline. सदैव निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़े। So the last part, I will wind up the class in the next 2 minutes. There is some sort of imitation of this reciting and hearing of Srimad Bhagavatam by professional men, and their foolish audience think that they will get free from the clutches of material attachment and attain the life of fearlessness. उनके भाग में कि बहुत से लोग श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के वाचन जो व्यवसायिक वाचन व्यवसायिक होते हैं जो धन लेके कथा करते हैं कथा बेचक उनका श्रवण का अनुष्ठान किया जाता है और अल्पज्ञ सोचते हैं कि वो भौतिक आसक्ति के चक्रवृत्ति छूट जाएंगे श्रवण करके और अभय पद का जीवन प्राप्त करेंगे। So we have to be so thankful and grateful to Srila Prabhupada, और इसीलिए हम श्री प्रभुपाद जी के बहुत आभारी हैं, who demonstrated his sincerity, जिन्होंने अपनी बहुत गंभीरता और एकांत और शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत किया है। भगवान के प्रति जो भक्ति है, when at an old age he went to the US with just 40 rupees in his hand. The books that he left behind, the translation that he has left behind, the lectures that he has left behind shows the quality of the personality. So there is an authentic engagement that we have with Srila Prabhupada. So it is not an imitation or a superficial engagement. So he is a sadhu who has actually sacrificed his personal comfort for all of us. So I will just read one very nice quote. एक बहुत ही अच्छा मैं कोट पढ़ना चाहूंगा। Leaving behind a spiritual path, आध्यात्मिक जगत को आध्यात्मिक पथ को किसी छोड़कर a dedication to Srila Prabhupada's lotus feet. श्री गोपाल जी के प्रति को जितना अपना आभार है। A gentleman makes his own life successful. एक सरल पुरुष अपना जीवन सफल बनाते हैं। Srila Prabhupada is the true gentleman. श्री गोपाल जी ने वास्तविक सफल। Many saints have performed unalloyed devotional service. शुद्ध भक्ति और Srila Prabhupada is a true saint. श्री गोपाल जी एक वास्तविक संत। The duty of an acharya or spiritual master is to find the means by which the devotees may render service to the Supreme Lord. Srila Prabhupada has given us this beautiful path through which we can achieve self-realization. And through this process, we can move out of fearlessness. Fearful wisdom. Fearlessness. Yeah, we'll have fearlessness and we'll move out of fearfulness. और भय से हम दूर हो जाएंगे। Hare Krishna, thank you very much. हरे कृष्णा, बहुत सुंदर समाप्त होता है। Yes. और किसी को जिज्ञासा कोई टीका आज
सब लोग मन खूब फ्रेश हो गए, चिंतन बदल गई, बाहरी चिंतन रहे